I have come to realize that we have a tendency to overcomplicate things. Some issues are very small, but we think so much about them that now they seem too big. So what's the solution here? It's simple combination of two things. Number one, just go out and do what you want to do. Don't think too much about it. So first point is always action. And this is where we are going wrong because we keep thinking about doing things before actually doing them and we overcomplicate stuff. And the second one is do it as scientifically and rationally as possible. So science is very important. Logic is very important. If you are not applying logic, if you're not applying any kind of scientific aptitude, if you're purely basing your action on the basis of emotions, then you are bound to lose. So don't be too emotional about it. You need to be intense but not emotional. The more rational you are, the better results you will automatically get. Let me now come to RBI exam. I was recently sitting with a student who had reached interview round, but he could not clear the final round. I asked the student, what are you doing to make sure you clear it this time? And he said without skipping a beat, sir, I will clear phase 1 easily. I know I want to improve my score in phase 2. That's what's stopping me right now. So that was his answer. I thought about it for a moment and then asked the student, what were your scores in phase 1 last year? He opened the scorecard, it was there on his phone, and we both saw that his score was 2 marks above the cutoff. It's a real story, somebody that recently met with me. So his scorecard was 2 marks above the cutoff. Now I asked him, you seem to be on the margin. Aren't you worried about clearing phase 1 this year? What if the exam is tougher? He smiled at me. He gave me that innocent smile that showed me, yes, there's something wrong, and said, sir, honestly, I thought I'll make it through phase 1 because I cleared it last year. I was not thinking so much about it. I had not even seen my scorecard. I thought I just cleared it. I'll clear it again. Now I'm worried. मैं तो आपसे बात करने आया था कि phase 2 कैसे क्लियर करना है या स्कोर कैसे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और आपने तो काम और बढ़ा दिया. Now it was my turn to smile. So I smiled and I told him, don't worry, I'm not here to scare you off. I'm here to help you see the reality. And when you see the reality, then automatically your actions are more based on logic and science and rationality rather than just emotion. It was his emotions that were driving him towards only focusing on phase 2 prep and ignoring phase 1 prep completely. Now, I wasn't telling him that ignore phase 2 and focus on phase 1. But at least know the reality. That's important. So let me tell you, I told him, let me tell you the reality of phase 1. And this is what I told the student as well, the reality about phase 1. Now, phase 1, we feel that it's an emotional game. It's all about just preparing for the exam and going and writing it. But it's a very scientific game. And it is not just knowledge that will get you through. Knowledge is one part of it. The preparation as well as the selection or clearing phase 1, but knowledge alone will not get you through. So it's just one part. That is why number 1, it's just one part of prerequisites to clear phase 1, because it's a more scientific game. So just knowledge will not get you through. It's a combination of 3-4 major different things, and I'm going to talk about all of them today. At the end, I will also show you how to actually enhance your score in phase 1 using an actual example. एक actual example लेंगे और उसके basis पे समझने की कोशिश करेंगे. तो पूरा देखना, watch till the end if you really want to improve your score. First as always, knowledge. If you know current affairs, if you can recall current affairs, if you know the basics of quant and reasoning, if you can read with speed in English, no one can stop you from clearing. It's very simple. If you're still not good enough in knowledge, just go out and do it, because there is no shortcut to knowledge, and knowledge always needs to be enriched. This is also another aspect of knowledge. You just don't have to acquire knowledge. You also have to enrich your knowledge, because you will keep forgetting. भूलते ही रहोगे, नॉर्मल सी बात है. आउट ऑफ प्रैक्टिस फील करोगे ही. क्वांट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा जो नहीं आता होगा. सो यू हैव टू कीप एनरिचिंग इट एंड नॉट जस्ट एक्वायर इट वंस. करंट अफेयर्स पढ़ लिया, 1 महीने नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे.
नया करंट अफेयर्स आ जाएगा, वो नहीं पढ़ोगे, यू विल फॉल बिहाइंड. सो इट्स लाइक अ ट्री, इट्स लाइक अ पौधा, उसको पानी नहीं दोगे तो पौधा मर जाएगा. तो ऐसे ही आपकी नॉलेज है, उसको रेगुलरली, डेली, वीकली, मंथली एनरिच नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगी. So if you want to clear phase 1 with confidence, and if you are weak in knowledge, then just go out and study. This is where action comes in, जो मैंने अभी आपको बताया था. Action is the first level, first step. If you're not doing anything, you have to just go out and do it. Because if you don't do it, if you keep thinking about it, nothing is going to happen. कुछ नहीं होने वाला है उसका. It is not going to solve itself. Let's come to the second one with this. So knowledge is not enough. I know that, and I'm going to prove it very shortly to you. There are some very scientific basic techniques that work well in getting you more marks. First of these techniques is learning to leave the right questions and attempt the right questions. तो हम इसको बोल सकते हैं learning leave right, attempt right. What does this mean? इसका मतलब क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इट इज अगेन वेरी वेरी लॉजिकल. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ. नॉट इवन एन एग्जांपल, इट्स अ फैक्ट. If you have seen the past year papers, you know by now that you can't solve 200 questions in 120 minutes. In fact, nobody can solve 200 questions in 120 minutes. आपको 200 मैथ्स के क्वेश्चन दे दिए, 200 इंग्लिश के खाली क्वेश्चन दे दिए 120 मिनट में सॉल्व करने के लिए, वो भी नहीं कर पाओगे. Nobody can do it. It's just not possible. You need at least a minute to solve every question on an average. Okay. That means that you can only solve 100 to 120 questions out of these 200 questions. Let's go on the borderline, 100 questions out of 200 questions. So you can only solve about 50% questions out of these 200 questions in 120 minutes. And that's the reality now, because in phase 1, even current affairs has become more difficult. So 100 questions is almost the average that you can solve. Somebody can solve 120, but on an average, you'll be able to solve 100 questions. That means, इसको flip करेंगे, that means you need to leave 100 questions. So instead of just being concerned about picking the 100 questions, you now have to be also concerned about leaving the 100 questions. If you're not leaving the right questions, if you're leaving the wrong questions, so you just don't have to pick 100 right questions. There will also be instances where you have to identify, okay, this is a wrong question, I have to leave it. So if you're picking the wrong question or leaving the wrong question, you're gone. Just because you did not pick the questions you could answer, you're out. That means we have to learn it, we have to practice it, we have to understand the importance of it, and we have to learn to leave the right questions. Now the question arises, how to learn? Two simple steps. First, very simple, it's actually no rocket science. साइंस का साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ, मतलब लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, साइंस भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं दैट दे आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट और दे आर गोइंग टू बी टू कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग लाइक दैट. ओके, टू सिंपल स्टेप्स. फर्स्ट, take regular good quality tests and then analyze every question, see if that question was required to be solved or not. तो मैंने जब टेस्ट लिया और टेस्ट का एनालिसिस किया, तो एनालिसिस में बस ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन सही किया गलत किया, नॉलेज पे नहीं जाना है. नॉलेज पे तो जाओगे ही, दैट विल ऑटोमेटिकली हैपन, बट आफ्टर यू हैव टेकन द टेस्ट एंड यू आर एनालाइजिंग द टेस्ट, you also see, did I pick the right question? Did I leave the right question or not? जो इस क्वेश्चन में मैंने 3 मिनट लगाए, was it meant to be solved or not? Also see the questions you did not attempt. How many of these did you know? How many of these could you have solved in a minute? So if you must have left a ton of wrong, questions that you could have attempted, you must have left them. So you also have to pick that out. Once you start seeing it, okay, once you start seeing it with your own eyes regularly after tests again and again and again, automatically you will start understanding, okay, this is how I pick up the right question, this is how I leave the right questions. Okay, so you have to ask yourself, why did I not attempt these questions? What could have changed in my paper so that I could have attempted these questions? So keep trying. It's going to be a lot of trial and error.
try, fail, try again, and it'll automatically come. Okay. So first take a test, very simple, then analyze the test. But when you're analyzing, don't just be concerned about your score. Analyze whether you were leaving the right questions or not, whether you were attempting the right questions or not. Okay. It will come only if you make it happen. This is what phase 1 wants from you, and that is the title. It is very important for us to understand what the examiner wants from us. The phase 1 examiner wants from us to have this skill, of understanding what to do, what not to do, what to pick, what not to pick. Okay. So it will come only if you make it happen through practice. This is what phase 1 wants from you. It's the skill to see what's right, what's not right. Okay. To be a good manager, this is the most basic decision making skill that is required. I hope it is clear. So these are the two things that we've understood. Number 1, knowledge. Phase 1 wants to see your knowledge. Number 2, phase 1 also wants to see learning to leave the right question and pick the right question. This is another one. Phase 1 examiner wants to see how you perform under pressure. आप pressure के अंदर कैसा perform करते हो, वो phase 1 examiner को देखना है. It's the third thing that phase 1 wants from you, how to handle pressure. They want to see. देखो phase 2 में pressure नहीं होता है. There you get enough time to solve all questions, do everything you want, even relax, have a nap also. You will have enough time to do whatever you want. कुछ लोग खाना भी खा लेंगे उसके बीच में. You will still not run out of time. But in phase 1, you're always under pressure. Pressure में सही respond करने के लिए तुम्हें चाहिए practice of that pressure. So pressure can only be countered, only be tackled through practice. If you practice it regularly, automatically phase 1 का pressure कम होने लगेगा. Okay. So pressure can only be dealt with through practice. There's nothing else. Okay. तो phase 1 के लिए pressure में सही respond करना, that is what the examiner wants to see in you. When you feel that pressure daily, जब आपको वो daily pressure feel होगा through mock test, etc., then you will write, when you will write mocks properly, you will learn to respond calmly in that pressure. So again, we are coming back to the same basic things. It requires practice. Practice comes through what? Comes through mocks. But just as in point 2, we analyzed a different thing after our regular mock test. We did not just analyze कि ये question सही किया है, गलत किया है, blah blah blah. No. We are also analyzing ये question pick करना था, नहीं करना था. Similarly, here after taking the mock, we analyzed how much pressure was I taking in this question. Was I taking too much pressure? Did I leave it in 3 minutes just because I could not handle the pressure? Okay. So when you do that analysis, then you will start learning the skill to respond better in pressure. 5 questions एक साथ, 10 questions एक साथ attempt करने की कोशिश करी, नहीं हुए, एकदम से pressure ऊपर चला गया. How do I respond? You will start learning that skill, and it's a very important key to clearing phase 1, because even if you have enough knowledge, even if you have practiced solving the right questions, the exam pressure has the ability to block your mind. You must have seen that happen with you at times especially when you're fighting with someone, when you're shouting at someone, when somebody is shouting at you, you have something called as tunnel vision. Under pressure, you can forget everything you know in a second, just like that. It can just go away. Okay. Pressure on our brain results in tunnel vision. As soon as your mind enters tunnel vision, you can't see anything clearly. Then all you can do is read one word at a time. That is it. You will not be able to understand. You will not be able to decode the question. Everything goes for a toss. Okay. Therefore, work on your ability to handle exam pressure. How do you do that? As I said, by practicing mock tests regularly and then telling yourself, where are you going wrong? So be scientific in it. Don't be emotional about it. Forget about your scores. Focus on your response under pressure. Okay. So after you've taken a mock test, keep analyzing while you're taking the mock, and after also
you're done with the mock test. Analyze how you were responding to pressure. Try and ask yourself, try and put yourself into क्वेश्चन. जैसे कटघरे में, वो आपकी अदालत में बैठता है ना, कटघरे में बैठा होता है एक सुपरस्टार, whoever comes, ऐसे ही आपको अपने आप को कटघरे में डालना है. यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द बॉक्स एंड आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन आफ्टर द टेस्ट. आपको अपने आप समझ आने लगेगा, ओके दिस इज वेयर आई वाज अंडर प्रेशर एंड दैट इज व्हाई आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई कुड हैव डन इट. इट्स सच एन इजी क्वेश्चन. आई एम सो स्टूपिड. The moment you start realizing it, automatically you will start responding differently. Now there is one last point that you might have never thought about. How much to score its performance, and it's a beautiful point. How much to score and where to stop and where not to stop. Now this comes from the fact of normalization. I hope RBI this year comes around with only one morning shift, nothing else, so that the entire khichdi of normalization goes outside the window. But even if it stays, normalization पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था how actually normalization works, and I told in that video that your score is dependent upon you are morning, this is evening guy. Your score depends upon the score of another person standing at the same percentile. Let's say both of you are standing at percentile 98. Your score is, let's say, 40 out of 80 in GA. His score is 60 out of 80 in GA. His paper was difficult, your paper was easy. You should have scored more, he should have scored less. होगा क्या? उल्टा होगा. Because his paper was difficult but he worked hard, he scored 60, but 98 percentile पे बैठे हो और उसके अगेंस्ट तुम्हारा स्कोर बस 40 है, उसका स्कोर नीचे कर देंगे, 60 से 50 पे आ जाएगा. तुम्हारा स्कोर कम था, तुम्हारा जो पेपर था वो इजी था, 98 परसेंटाइल पे बैठे हो, तुम्हारे अगेंस्ट दूसरे बंदे का स्कोर ज्यादा है, तुम्हारा स्कोर कम है, तुम्हारा स्कोर ऊपर ले जाएंगे. ओके, बट यू डोंट नो दिस गाय. व्हाट इफ दिस गाय वाज एट 30 बिकॉज हिज पेपर वाज डिफिकल्ट, फिर तुम्हारा नीचे हो जाता, राइट? So you don't know where the other person is. That person's performance is not in your control. What is in your control? In your control, what you can analyze regularly, and this will also come with practice. It's super easy. Is to, as soon as you see the paper, जैसे ही आपने पेपर देखा, ये तुम्हारी आंख है, immediately, as soon as you see a certain part of the paper, quant देखा, reasoning देखा, English देखा, 5-10 क्वेश्चन के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा भाई कितना डिफिकल्ट सेक्शन है और कितना एवरेज स्कोर होना चाहिए. सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल नंबर 1 और सेक्शन का एवरेज स्कोर नंबर 2, एंड यू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट. यू हैव, दैट इज द मिनिमम दैट यू हैव टू परफॉर्म. आई एम नॉट सेइंग you stop there. That is the minimum that you have to perform. This is what normalization has taught us, and this is very important. Okay, it ensures that normalization doesn't kill you. It's very simple. I'm repeating. Learn to identify the average score as you're attempting the paper, and then score above the average score, because if you don't match the average score, anyways you're doomed. If the average score in GK, let's say GK के क्वेश्चंस बड़े लंबे लंबे आए तो तुम्हें पता है एवरेज स्कोर कम होना चाहिए. लास्ट ईयर 30 था, इस साल भी ऐसा ही लंबा पेपर है, 25-30 के आसपास एवरेज स्कोर रहेगा. आई हैव टू स्कोर मोर देन दैट. सो पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस हेल्प्ड यू आइडेंटिफाई, ओके दिस इज द एवरेज, सो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस सेक्शन. ओके, आई विल ऑल्सो शो इट टू यू हाउ इट वर्क्स. मैं एक बार आपको पास्ट ईयर पेपर्स की बुक के थ्रू समझा दूंगा किस तरह से काम करता है, ठीक है ना. उसकी तरफ मूव करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट. आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट एंड टेल यू कि एवरेज स्कोर किस तरह से मेंटेन करना है. बट टिल नाउ, इफ आई हैव टू रिपीट, दीज आर द 4 मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न in order to make sure that you fulfill what phase 1 wants from you. First is knowledge, but it's not the only one. Then to learn the skill of leaving right and attempting right. Then handling pressure through practice. And last, being able to understand the minimum that you have to score in every section so that normalization doesn't kill you. And this will also come with practice. Okay. Now let's move to the past year paper book.
आई विल शो इट टू यू कि किस तरह से आपको एवरेज स्कोर आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से उस एवरेज स्कोर को क्रॉस करना है। ओके, तो ये है प्रीवियस ईयर पेपर की बुक 2018 टू 2024। 2024 लेटेस्ट एग्जाम था। सबसे पहले मैं जर्नल अवेयरनेस उठाता हूँ 2024 का, और जर्नल अवेयरनेस के थ्रू 2 मिनट में हम लोग समझ लेंगे कि जो 4 पॉइंट्स हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करने हैं एग्जाम में, या फिर मॉक टेस्ट में किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ही जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन है, आपने क्वेश्चंस देखना शुरू किया, सॉल्व करना शुरू किया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा, यार फैक्चुअल लग रहा है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड उठाया, फैक्चुअल लग रहा है, क्वेश्चन भी छोटा है, ऑप्शंस भी सारे फैक्ट्स हैं, आता है तो सॉल्व करूँगा, नहीं तो आगे बढ़ूँगा। अब आप देखोगे ध्यान से थोड़ा सा, तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, देखो सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस फैक्ट्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक मुझे सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल लग रहे हैं, 27 तक ये सब फैक्चुअल हैं। तो जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया पेपर को, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते करते साथ में मैं ये कैलकुलेशंस भी कर रहा हूँ, और मेरी कैलकुलेशन ये है कि यार फर्स्ट से 27 क्वेश्चंस जो हैं फैक्चुअल स्मॉल आए हैं, जो मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिए हैं। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन लंबा आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो आप साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे हो कि इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं, इसमें 80-90% मेरी एक्यूरेसी होगी। अब आगे बढ़ता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस, टाइम मेरे पास है, लॉन्ग क्वेश्चंस या तो साइड में रखो, या लॉन्ग क्वेश्चंस को एटलीस्ट काउंट करते रहो अपने ब्रेन में, अप्रॉक्सीमेट काउंट भी चलेगा कि यार ये लंबे क्वेश्चन है तो एवरेज स्कोर कितना बनना चाहिए, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, पढ़ने में, समझने में टाइम लगता है, इट टेक्स मोर टाइम। तो आपने फिर ये लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू किए, देखो ये कितना लंबा क्वेश्चन है, कितने लंबे लंबे ऑप्शंस हैं, ये कितने लंबे ऑप्शंस हैं, इसको डिकोड करने में टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली नॉर्मल है। तो आपको जब अगर ये बहुत सारे a lot of such questions if you are finding, then you automatically know within 5 minutes 10 minutes कि यार जो एवरेज स्कोर है ना वो शायद कम जाने वाला है, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो एवरेज स्कोर 30-35 इसके अराउंड होना चाहिए। आई हैव टू ट्राई एंड स्कोर 40+, जिससे कि मेरा एवरेज स्कोर बढ़ सके। तो मैंने ये 27 क्वेश्चंस ढूंढे छोटे। लेट मी स्टार्ट सर्चिंग फॉर सच मोर क्वेश्चंस। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम 2024 एग्जाम कि इस तरह से आपको अपने आप से बात करते रहना है while you are actually attempting the mocks and then attempting the final exam। ये एक दिन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है आज करोगे आ गया। You have to practice, you keep practicing, it will keep coming automatically after a while you will realize कि यार ये बहुत अच्छे से मुझे स्किल आ गई है। ठीक है। प्रेशर में कैसे, लेट्स से तुमको 10 क्वेश्चन एक साथ मिले। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन 35 उठाया, मॉडरेट क्वेश्चन है, यहाँ से 35 से 45 तक मैं करता गया क्वेश्चन, देखता गया और मुझे दिखता गया यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहे। सो 35 to 45, 10 questions gone। I don't know any of these questions, but it just means these are 10 questions that I could not attempt out of 80 questions। I still have 70 questions। 70 में से मैं 34 ऑलरेडी कर चुका हूँ। I still have 35 more questions to look forward to। Let me focus on these 35। जब ये 0 हो जाएगा उसके बाद प्रेशर लूँगा तब बेटर है। This is just one talk that I'm doing with myself। ये एक तरीके की बात हो गई जो मैंने अपने आप से करी, जिससे कि मेरा प्रेशर कम हो। तो इस तरह से when you are taking mocks और even when you are analyzing mocks, एनालिसिस के टाइम पे भी you have to try and think of these kind of things। ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर, ये सब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग 1 by 1। रिमेंबर द 4 थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, दोज आर द की। नॉलेज हो गया, लीविंग द राइट क्वेश्चंस, अटेम्प्टिंग द राइट क्वेश्चंस, प्रेशर एंड नॉर्मलाइजेशन। ओके, लेट्स से अब नीचे आते हैं। ये हम करते गए, मुझे रियलाइज़ हुआ क्वेश्चन नंबर 67 डिफ़िकल्ट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछ लिया गया। 67 ऑनवर्ड्स मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया पेपर, या फिर ये वाले क्वेश्चंस तो वैसे ही नहीं आने, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट लीविंग देम, छोड़ना शुरू करते हैं। देखो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस एक साथ हैं बहुत सारे, छोड़ना शुरू करते हैं। आपने रियलाइज़ किया कि ये 10 क्वेश्चंस अगर मैं करने बैठता लास्ट के तो मैं 5 मिनट ख़राब कर देता, बट जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एक साथ इन्होंने डाल दिए हैं, लेट्स स्टार्ट लीविंग देम।
सो यू आर लर्निंग टू लीव ऑल्सो, वो भी आपको साथ साथ सीखना है। और एग्जाम के बाद व्हेन यू सिटिंग विद योर सेल्फ, यू टू आस्क योर सेल्फ कि यार डिड आई लर्न टू लीव, डिड आई लीव एनी क्वेश्चन डेलिबरेटली, जो मैंने छोड़ा वॉज इट द राइट कॉल, गलत भी हो गया कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई मेड अ कॉल, डिड आई मेक अ कॉल, इफ आई डिड मेक अ कॉल वॉज इट द राइट डिसीजन कि हाँ यार ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही आपको हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही अपने आप से बात करनी है, और इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे यू हैव टू डिटरमाइन वेयर आर यू स्टैंडिंग। ओके, लेट मी रिपीट, नॉलेज नंबर 1, लीविंग द राइट क्वेश्चन, अटेम्प्टिंग द राइट क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर नंबर 3 एंड नॉर्मलाइजेशन नंबर 4। ये 4 पॉइंट्स को ध्यान रखोगे, धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली, these are the things that phase 1 wants from you. If you are able to satisfy them, automatically your score will start increasing. Okay, that is all from my side. पढ़ते रहिए, keep studying hard, do not ignore the previous year paper books. These are the keys, these are the bible of your preparation. जब previous year paper book को अच्छे से analyze करोगे, automatically your learning of the examination will improve. Okay, all the best, bye bye.